में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको MBA थर्ड सेमेस्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। तो आइए कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हर क्वेश्चन का वन बाय वन आंसर देंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस, पहला क्वेश्चन है डिस्कस गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के गाइडलाइंस से पूछी गई है। सेकंड क्वेश्चन है आउटलाइन ट्रेनिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल्स। थर्ड है एक्सप्लेन पेडागोजी। फोर्थ है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। फिफ्थ है डिस्कस आरओआई ऑफ ट्रेनिंग। सिक्स्थ है एक्सप्लेन वेरियस टीचिंग एंड एड्स यूज्ड बाय ट्रेनर्स। सेवंथ है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एट्थ है व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेनिंग डिजाइन। Ninth, define training, discuss classification of training need with situable example. 10th, explain various levels and models of training evaluation. 11th, what do you understand by training and training learning? What do you understand by learning? सब क्या जानते हैं? Question number 11 में ये पूछा है। Question number 12, discuss different training methods of technique used by corporate. क्या क्या ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो कि कॉर्पोरेट में यूज होती है, वो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट नोट पूछे, लेसन प्लानिंग और ट्रेनिंग क्लाइमेट में के शॉर्ट नोट्स पूछे गए। तो ये थे दोस्तों अपने क्वेश्चंस। आइए हम वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर्स पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस गाइडलाइन फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप वन हमसे कह रहा है एस्टेब्लिश योर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको एस्टेब्लिश करना, ये सबसे पहला स्टेप है ट्रेनिंग मॉड्यूल का। सेकेंड है डिफाइन योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को डिफाइन करना। थर्ड है डिसाइड ऑन द राइट कंटेंट फॉर्मेट, अपने जो कंटेंट है उसको डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे हमें कितनी देर बोलना है, क्या बोलना है, कि जो बोल रहे हैं हमको सही है कि नहीं है। क्वेश्चन स्टेप 4 है क्रिएट योर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट। ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट मतलब आपको किस मोड में आपको पढ़ाएंगे, वीडियो रहेगा और ऑडिएबल रहेगा, वीडियोबल रहेगा, ऑडियो वीडियो दोनों रहेंगे। किस मोड पे रहेगा, मतलब गूगल क्रोम रहेगा, जूम मीट रहेगा, किस मोड पे आपने वीडियो को ट्रेनिंग गाइडलाइन को जनरेट करेंगे। फिर से टेस्ट एंड टेस्ट अगेन, फिर उसको एक बार टेस्ट, जो भी आपको बोलना है उसको एक बार आप टेस्ट करेंगे अच्छे से, उसके बाद अपन बोलेंगे। स्टेप 6 है अपलोड एंड लॉन्च योर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल। अपलोड, फिर उसके बाद जो भी हमें बोलना है उसको अपलोड करना है, ये अपना स्टेप नंबर 6 बोलते हैं। आइए स्टेप पर डीपली पढ़ लेते हैं। स्टेप 1 है एस्टेब्लिश योर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। The most important step come right of the training that understanding the challenge, set objective on what you need your training to achieve. Second, define your audience. It is vital that you understand who exactly training is so far that you can pitch it at difficult and simplistic will cause a drop off in engagement and plastic participation. So third is to decide on the right content format. There is no such thing that is on size fits all when it comes to building online training modules. Some formats may work well for some topics but not with others. Engage subject matters expect at this stage to determine the best content format for each module. Decide the right content from there. So what for step 4 the create your online training modules template. Once you have decided to workplace, मतलब एक बार आपने वर्क पर डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, उस टॉपिक पे किस जगह बोलना है, तो बिल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पहले हम उस मॉड्यूल को तैयार कर लेंगे और एक बार ट्रेनिंग मोड में उसको चालू करके देखेंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं आवाज़ सही आ रही है, गलत आ रही है। Editing an existing template can save your time and help you ensure consistent bonding throughout. ठीक है, स्टेप 5 बोला टेस्ट एंड टेस्ट अगेन बिफोर लॉन्चिंग योर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल। जो भी हमें
जो भी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसको एक बार अच्छे से टेस्ट कर लेंगे कि हमारा जो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अगर प्रॉब्लम आ रही तो उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करके कि ताकि हम जब जिस टाइम ट्रेनिंग असाइन हो तो उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये बार हम पढ़ लेंगे। टेस्ट इन टेस्ट सम ऑडियंस कैन जनरेट फीडबैक फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। टेस्टिंग विल हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल स्लैंग्स or gaps in the training may must need addressing before it pushed out to one's intended audience. Question to outline training evaluation criteria and principle. Training evaluation model, a good and practical method of evaluating training is to follow to the Philip V model, also known as Philip ROI model. Model which was developed by Jack Philip broadly follow the Kirkpatrick model. Kirkpatrick model. The Philip V model follow the following sequence of level of training evaluation: level 1 reaction, level 2 learning, level 3 application, level application amplification, level 1 impact, and level 2 return on ROI. First है reaction, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया था? आउटलाइन ट्रेनिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन की क्या क्या क्राइटेरिया, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए थे। तो लेवल फर्स्ट है रिएक्शन, द मॉडल बीइंग्स एंड इवैल्यूएटिंग पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम दे हैव गॉन थ्रू। द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स इज टू यूज टू पास ट्रेनिंग सर्वे। लेवल learning, this is access to learning actually look place. To put in another way, it is great way to measure to the training programs learning objective have been met, and if there was audience and attentiveness, a way of doing that is to do pre and post test. Level 3 है application and implementation. All the stages the Philip it model tries to distinguish it from the problem. If this with the application of learning as it fit in the implementation level for impact. All the fourth level, the Philip V model looks at the total impact the training as had the organization. It had only attributes impact to the training effectiveness, but also considered organization factors that might hinder and the success for implementation of the skillful again during training. Level 5 return on investment. This is where the Philip V model distinguish itself from the Kirkpatrick model. It measures the return on investment of the following training. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहना चाह रहा है एक्सप्लेन ट्रेनिंग पेडागोजी। पेडागोजी एक्सप्लेन पेडागोजी मतलब होता है to teach to someone, to give knowledge to someone, to a leader. The training of learners becomes to teachers learners to become teachers. टीचर्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको पेडागोजी बोलते हैं। Regarding the enhancement of the training process and the improvement of the teaching and learning quality as well as the development of teaching competence, pedagogy pursues a way of teaching students, whether it is the theory or practice of educating. It is a relationship between the culture and techniques of learning. The main of pedagogy is to build up perseverance learning of the student and work on the development of skills and attributes of the learners. What are components of training? आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। What are the components of training need assessment? ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या क्या कंपोनेंट है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया। आइए देखते हैं। Identify the purpose and scope. The 5 main training need assessment model, जो 5 नीड मॉडल के नीड्स हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई पर्पस एंड स्कोप। उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पर्पस है, वो हमारा पहला पॉइंट है। कलेक्शन
collection data को collect करना. Third, analyze data and data को analyze करना. Fourth, determining training needs. Fifth, develop training solution. First, identify the purpose and scope. This is the initial step. Clearly define the purpose of the training need, analyze and determine with the scope. Identify the goals, objective and desired outcomes of the analysis. Second, collect data को deeply पढ़ लेते हैं. Gather relevant data to access the training need. Data collection methods may include survey, interviews, focus groups of observation, performance evaluation and existing and downmention. This step gather information about current job requirement, performance gap, skills, deficiencies and training preferences. Third, analyze data. Analyze the collected data to identify the pattern, trends and areas where training is needed. Look for common themes, skills, gaps and training opportunities. For the determining training needs, based on the data, the analyzer determine the specific training needs of individual terms on departments. The involvement identifying the skills, knowledge and competencies that must be developed or improved to bridge performance gaps. So if they develop training solution, in this final step, develop training solution to address identify needs. This may involve creating training programs, workshops, e-learning modules on the job training or mentoring initiatives. This is a question 4 भी हमारा खत्म होता. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या कहना चाह रहा है? डिस्कस ROI ट्रेनिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग क्या कहना चाहता है? ROI ट्रेनिंग क्या होता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है. आइए इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं और समझते हैं. ट्रेनिंग ROI measure how organization gains from the investment in training. मतलब आप किसी को ट्रेनिंग देने के बाद आप उससे क्या रिटर्न लेना चाह रहे हो, उसका मतलब क्या रिटर्न होगा, क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट करा है उस जो ट्रेनिंग पे उसको क्या रिटर्न होगा, उसको आप ROI ट्रेनिंग बोलते हैं. It is financial metrics that explain on the benefit and businesses results related to training programs. In it is NATA training satisfaction measure which indicates how the happy employee are which are the training with the training. Okay, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 भी खत्म होता है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या कहना चाह रहा है? एक्सप्लेन वेरियस टीचिंग एड्स यूज्ड बाय ट्रेनर्स. क्या क्या टीचिंग एड्स हैं जो कि ट्रेनर्स यूज करते हैं, आइए पढ़ते हैं. Explain various visual aids the trainer that are vision sense that are known visual aids, for example real objects, models, pictures, charts, flashcards, blackboards, chalk boards, chalk slides. Second, audio visual में ये यूज होता है. ऑडियो एड्स में क्या कहता है? aids that involve the hearing sense are known as audio aids. जो भी आपका सुनने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसको ऑडियो एड्स बोलते हैं. जो लिखने में आपको चॉक्स, ब्लैकबोर्ड, पेंसिल, स्केल, रबर, ये जो भी हम आता है ये विजुअल एड्स में आता है. फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर एक्सेट्रा. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछा है. आइए पढ़ते हैं. ट्रेनिंग इज अ फोकस ऑन टेक्निकल मैकेनिकल ओरिएंटेड प्रोसेस. ट्रेनिंग जो होती है वो टेक्निकल मैकेनिकल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है. डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ स्किल इज बेस्ड ऑन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट. डेवलपमेंट में आपका बेस्ड ऑन थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. ट्रेनिंग इज अ वन टाइम डील. द डेवलपमेंट प्रोसेस इज ऑनगोइंग. ट्रेनिंग जो होती है वन टाइम डील होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. ट्रेनिंग इज फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. ट्रेनिंग जो है आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फोकस करती है. डेवलपमेंट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी. डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी होती है. ट्रेनिंग इज अबाउट स्पेसिफिक स्किल फॉर द जॉब एंड बिहेवियर. ट्रेनिंग जो होता है आपका job or behavior. Development is enhancement of information and knowledge of the non-technical function of the organization. The majority of training is for non-managers. The management and executive development. Training is focused on current job market. Training जो होता है current job market focus होती है.
Development preparing for the future of work. जो डेवलपमेंट होता है वो वर्क के फ्यूचर पर डिपेंड होता है. Training could be lead to the improvement of specific job related skills. Growth can be result in personal development and the development of general personality. Question number: what are the factors affecting training design? Factors affecting training design are as follows: overall goals of training, learning objectives, course content, course lifetime, design needs, participants, intangibles, resources, evaluation factors. Overall goals of training identify the domain of learning or to be targeted, knowledge, skills, attitude and behavior. Determine specific skills are to be taught that will be required practice and can be measured. Training is oriented to what? Attitude or behavior. Consider if any evaluation factors may be addressed. Second, learning objective. Learning will determine the specific desired outcomes of training by answering the question upon completion of this training, what should be a participant know and be able to do. Define what constitutes successful course completion, course content. Determine the amount of research and expertise needed to develop and track revenue. Timely and up-to-date content as well as the length of time that will contain will remain its relevance. Course lifetime. Determine the course schedule including frequency of training as well as way to test the objective material and content of continued relevance. Question number third point है the design needs. Ascertaining need whether this will be newly trained or if there is a existing course to be updated. Identify training designs and determine development time and cost. 6. Participant. Determine size, location and characteristics of the target population as well as their content, level of experience and expertise with the topic. 7. Intangible trainers enjoy the repeated positively of materials that represent creative and enjoyable resource. Determine how many instructors will be needed and how they will be trained in scheduled requirements. Evaluation factor. Ideally, successful training should be periodically repeatedly for a new crop of trainers. Define training. Discuss classification of trainer needs. Suitable example. Question number 9. कौन से कह रहे ट्रेनिंग की definition. Classification of training needs a suitable example. Dual as beach. Define training as the organized procedure by which people learn knowledge and for a skill definite purpose. Training refers to the teaching and learning activities carried for a primary purpose of helping members of organization acquire and apply the knowledge, skills, ability and attitudes needs by a particular job and organization. Classification of training needs suitable example. There are different types of teaching needs. First, organization needs. Second, work team needs, and third, first organization needs. Though needs and organization needs or workman needs. To be fully executive, any analysis of trainers' needs must short with the need of whole organization. Some of the key questions of corporate strategy that occupy the mind of top management of any organization are: what are the aims of our business? What are the strength and weakness? क्या business की aims of हैं, क्या business की needs हैं? One of the major strength and weakness of organization is to workforce, workman needs. Each of level below top management will normally be expected to participate in corporate strategy at a departmental or work team level. Manager or participate management departmental functions such as production, marketing, finance and personnel often call upon situation heads. इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा खत्म होता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Explain various levels and models of training evaluation. Various levels of
ट्रेनिंग इवैल्यूशन मॉडल से क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, आइए पढ़ते हैं। लेवल फर्स्ट है रिएक्शन, सेटिस्फेक्शन, इंटेंशन। लेवल 2 है नॉलेज रिटेंशन। लेवल 3 एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन। लेवल 4 बिजनेस इम्पैक्ट। लेवल 5 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट लेवल है रिएक्शन, सेटिस्फेक्शन, इंटेंशन। सेंटर द लर्नर बाय असेसिंग देयर सेटिस्फेक्शन with training it their motivation to apply what they are learned. Organization that they don't have training and reinforcement programs are or are just building and start by evaluating. Level 2 or knowledge retention, focus on what the learners retain from their learning. Personal program learning test is helpful to ensure the learners understand how to apply new knowledge. Level 3 application and implementation, we use a variety of follow-up models to determine whether learners are applying new skills or behavioral assessment assignment followed by in-depth model checks. Business impact. Level 4 focus on the actual result of achieving from a training program. Question number, what do you understand by learning? Explain process of learning in detail. Learning क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या है? What do you understand by learning? और लर्निंग क्या प्रोसेस है, हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। Learning is the process that leads to change, which acquire result, experience and increase the potential of improved personal and future learning. That chance the learner by may happen at the level of knowledge, attitude or behavior. The learning process following steps, learning के following steps हैं, आइए उन steps पढ़ लेते हैं एक एक करके। First is stimuli, second attention, third recognition, fourth translation, fifth reinforcement, sixth behavior, seventh reward, eighth habit, ninth motive, tenth effort. See 10 process learning की, आइए इन process को पढ़ लेते हैं एक एक करके। Stimuli are any objective in language which draw the attention of people. Employee get stimuli from the attention of their superior. Second, attention, action of the superior. Second, action. The degree of attention depends upon the nature of stimuli. All stimuli are paid attention to. Technical and interesting stimuli are highly attended. Third, recognition, attention. Paid stimuli are recognized acceptable factors of improvement and new lifestyles. Employees paying attention to stimuli are recognizing the stimuli for learning purpose. Fourth, the translation. The translation and evolution process is a crucial point for implementing the stimuli in behavior and or behavior through reinforcement. Employees behave properly through attitude change, objective, mental and physical development. The reinforcement. Reinforcement perception is the learning. The perception process involves stimuli, attention, recognition, translation and behavior. Sixth, behavior. Learning changes behavior through reinforcement and of passive knowledge. It makes permanent change in behavior. Seventh, reward. Employment accept reward by learning if translated behavior. It's accepted, otherwise it is not accepted. Employee development behavior into habits and habits. 8 point the habits. The permanent change in the behavior become habit. किसी भी चीज में परमानेंट चेंजेस होते हैं तो उसको हैबिट बोलते हैं। which involves continuous improvement behavior performance, जो कि आपका कंटिन्यू बिहेवियर परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करता है। मोटिव्स मतलब कि आपका मोटिव क्या है, किसी ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ट्रेनिंग क्यों होती है, ट्रेनिंग का मोटिव क्या है, ये हमसे मोटिव पॉइंट में पूछा है। आइए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। मोटिव डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन थ्रू लर्निंग्स डेवलपमेंट। हाई मोटिव लेस सेटिस्फेक्शन, लर्नर्स हैव लो मोटिव्स। जो भी जिसको जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उसको उतना ज़्यादा मोटिव मिलेगा, जिसको जितना कम सेटिस्फेक्शन होगा उसको ज़्यादा मोटिव मिलेगा। देन लास्ट पॉइंट अपना एफर्ट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। हैबिट हेल्प अचीव गुड एफर्ट्स। हैबिट जो होती है आपको गुड एफर्ट्स की तरफ
एक्सटेंड करती है. एंड परफॉर्मेंस, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एफर्ट्स आर automatic outcome of good habits which are acquired through the learning process. Self development is possible through self effort. Employees willing to develop themselves are less self motivated and effort oriented. Discuss different training methods of techniques used by corporate. इसके साथ क्वेश्चन 11 हमारा खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. क्या कहना चाह रहे हैं? डिस्कस डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ टेक्निक यूज्ड बाय कॉर्पोरेट. जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं कॉर्पोरेट में, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा. आगे रिपोर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. ट्रेनिंग मेथड एंड टेक्निक्स आर फॉलोड. टेक्नोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टिमुलेटर, instructor lead training, the role playing, films and videos, coaching and monitoring. First, technological based training is also known as computer based training or e-learning. While e-learning consists of online training course and materials, computer based training consists of training platforms such as software, corporate games and soft material. On the job training happens when employees receive first hand instruction from their co-workers and superiors, then they start working immediately with their jobs. Second, stimulator. It is most commonly used in technical fields such as medical and aviation industries where HRM practices often stimulator training method. Third, instructor lead training takes place in classroom styles and achieving instructor prepare and present training material with visual components to group of employees. Fourth, role playing in corporate potential workers, seniors. By role playing, this method is standard among industries that require personal company interaction or strategic advice such as consulting industry. Fifth thing is films and videos has become popular due to its scalability and easy to access features. These companies provide screen recording, live actions and animated videos to train their employees about specific matters. Sixth, monitoring coaching allow one-to-one training or private training sessions. Often companies adopt monitoring over coaching training methods to facilitate their employees' development opportunities or factors personal relationship among individual and their companies. Question number 10. Write short note on the following planning and question number 12 हमारा खत्म होता है. ये question number 13 की तरफ चलते हैं. Write short note on the following. First, lesson planning. Second, training climate. First, training climate. Training climate क्या होता है? First, lesson planning. Lesson planning is an instructor roadmap of all that student need to learn and how it will be done effectively during the class time. Then you can design appropriate learning activities and develop strategies to obtain feedback on student learning. Having a carefully constructed lesson plan for each 3-hour lesson allow you to enter the classroom. You will more confidence and maximize your chance. Students a successful lesson plan address and integrates their 3 component learning objective, learning activities, assessment to check for student understanding. Be a training climate. Training climate includes the tangible and intangible aspects related to the training environment, their compromise or evidence, perceptions for the training programs, feeling, etc. It refers to workplace characteristics that either inhibit or facilitate the transfer of the job of what has been learned in training. इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.